Yes, coming back to the discussion, we will come with a new topic, that is Limitation Act 1963. Now, before coming to the core discussion of the provisions of the Limitation Act 1963, we have to understand the classification of law. Law is generally classified into two types. Law is generally classified into two types. Yes, you all can write that law is classified into two types. One is substantive law, and the other one is adjective, adjective, or you can see it as procedural law. In the first discussion of our civil procedure code, I have mentioned this classification of law, that is, law is further classified into two types, substantive law and the other one is procedural or adjective law. Now, substantive law deals with the rights and liabilities of the subjects. It deals with the rights and liabilities of the subjects, while procedural law deals with the enforcement of such rights. It provides the machinery, enforcement of such rights, enforcement of such rights and liabilities. Giving some suitable examples, substantive law covers the contract, the Contract Act 1872, Partnership Act, Indian Penal Code, which deals with the crimes and offences. In short, I am writing here IPC, then Transfer of Property Act 1882. These are the laws which comes under the category of substantive law. And while talking about the procedural law, obviously the first thing will come is CPC, then coming CRPC. Limitation Act is also coming under the ambit of this procedural law. Evidence also, law of evidence is also coming under the category of procedural law. See, we think that substantive law only deals with the substantive rights and procedural law deals with the enforcement of the rights. See, the statement is not wholly true. The statement is not wholly true. The reason is that neither the law of the remedies belongs to procedure nor the rights are merely for substantive law. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये प्रोसीड्यूरल लॉज में भी कुछ सब्सटेंटिव राइट्स दिया है. जैसे एविडेंस में आप देखोगे तो सेक्शन 115 which talks about estoppel. This is a substantive law. In CRPC we have section 125 talking about maintenance. This includes the substantive law. So it is not wholly correct to say that substantive law deals with the rights and liabilities only and procedural law deals with the enforcement of such rights or provides the remedies, because procedural law or the adjective law also contains some substantive rights. Now today's discussion will all about the object behind making of the Limitation Act. What was the sole purpose of making the act? Okay, so further delay, let us see this law of limitation. This law of limitation was enacted and passed 5th October 1963. This is also said as 36th enactment. 36th enactment. The law of limitation came into force on 5th October 1963 and it is the 36th enactment by the Parliament, and it applies to the whole of India. To find out the objective of law of limitation, we have to discuss
we have to discuss the sole reason behind making of this limitation act. Take an example. Mr. A has given a loan to Mr. B. What was the loan amount? Take an example. Loan of rupees 1 lakh. Mr. A has given a loan of rupees 1 lakh to Mr. B, and the date was 15th December 15 December 2018. 15 दिसंबर 2018 में मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया लोन मिस्टर बी को दिया था. सो ऑब्वियसली when मिस्टर ए is giving a loan, मिस्टर बी is under an obligation to return the money along with interest. तो मिस्टर बी को टाइम दिया था पे करने के लिए. मिस्टर बी should pay the amount. Mr. B should pay the amount or repay to be repaid within this date, that is 31 December 2018. 31 December 2018 मतलब 15 दिसंबर 2018 और 31 दिसंबर 2018 रिटर्न करने का डेट था. So the loan was given on 15th of December 2018 and that money has to be repaid by Mr. B on within 31st December 2018. आगे दे मान लो आगे दे दिया तो अच्छा बात है, बट उसका लास्ट डेट मतलब ड्यू डेट कौन सा है? 31 दिसंबर 2018. बात क्या है? मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया. मिस्टर बी ने पैसा नहीं दिया. Not repaid. So the first condition is that Mr. A has given a loan of rupees 1 lakh and that 1 lakh rupees loan is to be repaid within 31st December. But third जो हुआ है उन्होंने पे नहीं किया. Mr. B has not paid Mr. A. Now where Mr. A should go? Mr. A has to go before the civil court for filing a matter in the name of suit for recovery of money. पैसा रिकवर करने के लिए मिस्टर ए को कोर्ट में जाना है. बात है क्या लिमिटेशन कब से शुरू हो रहा है? When to file the case? When the limitation will be counted? When the period of limitation will start or counted? तो ये आपको देखना पड़ेगा. देखो जब आई एम टॉकिंग अबाउट सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी, तो these suits have to be filed within 3 years. Suits have to be filed within 3 years. देखो पैसा देना था उसको लास्ट 31 दिसंबर 2018 वाज द लास्ट डेट. लिमिटेशन शुरू हो जाएगा नेक्स्ट दिन से 3 साल तक. तो मान लो लिमिटेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मान लो फर्स्ट जैन 2019 से लेके 31 दिसंबर 2021. देखो 3 साल होता है. 19, 20, 21. So 31 December 2021 is the last date for filing the matter before the civil court in regard to suit for recovery of money. Now Mr. A has to file the matter. So it is Mr. A should file recovery of money, should file suit for recovery of money within 3 years. और 3 years कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2021. तो ये इसका लिमिटेशन पीरियड है. इसका मतलब जब से ड्यू डेट कवर हो गया. So the due date was 31st December 2018. From the next day the limitation period is getting commenced till it will work for 3 years. तो 3 साल का अंदर में Mr. A can file a suit for the recovery of money. Now the question comes, if the suit has been filed after 31st December, if the suit is filed after 31st December, उस कहानी में क्या होगा? Coming to the next page, क्या होगा? मान लो if the matter is filed, if matter is filed after 31st December 2021, that is on the day when the 3 years is completed, when the limitation period is getting expired.
तो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर कब हो रहा है? 31 दिसंबर 2021 रात 12 बजे का बाद ये एक्सपायर हो जाएगा. नाउ इफ सपोज टेक एन एग्जांपल, if this person comes in the month of February 2022, can the court entertain the case? No, the court will reject, because the suit is now time barred. The suit is barred by the limitation period. So ultimately what limitation act says, write down. Limitation act says where there is a remedy, it should be exercised by time, or otherwise the court cannot help. लिमिटेशन का ऑब्जेक्टिव ये है, क्या है? इफ अ पर्सन हु इज अवेयर ऑफ टाइम, इफ अ पर्सन हु इज अवेयर ऑफ हिज रेमेडी, दैट पर्सन शुड फाइल द मैटर विद इन द प्रॉपर लिमिटेशन पीरियड. फेलिंग टू फाइल, द कोर्ट कैनॉट हेल्प यू. तो मान लो इधर में मिस्टर ए, मान लो सपोज टेक एन एग्जांपल, मिस्टर ए goes to advocate in the month of February 2022. सर एक्सपायरेशन हो गया सर, लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया. द एडवोकेट शुड आस्क द क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या आस्क करेगा? नंबर 1, व्हेन यू गिव द मनी. पहला क्वेश्चन ये आएगा, व्हेन यू गिव द मनी, राइट. तो पैसा कब दिया था सर? इट वॉज 15th of December 2018. So Mr. A will disclose the fact that he has given the money to Mr. B on 15th of December 2018. नेक्स्ट क्वेश्चन वो आएगा, what was the last due date. तो ये तो क्वेश्चन पहले ही पूछेगा एडवोकेट, बिकॉज एडवोकेट को जब आप पैसा दे रहे हो, एडवोकेट के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आता है क्या कोर्ट के सामने सफिशिएंट रीजन देना है क्यों इतना देर में आपने सूट फाइल कर रहे हो. कॉज ऑफ एक्शन तो डिफीट हो जाएगा. 3 साल आपको टाइम दे रहा है सूट फाइल करने के लिए, बट आप 3 साल बाद आते हो February 2022. दिस क्वेश्चन विल get arise in the court also, and the advocate prior to filing of this case will demand such questions. What was the last due date? Then obviously we will say that 31st December 2021 was the last due date. इसका मतलब क्या है? एक्सपायर्ड लिमिटेशन. आपका वो एप्लीकेशन क्या सूट आप फाइल करते हो वो रिजेक्ट हो जाएगा ऑन द ग्राउंड ऑफ टाइम बर्ड. तो by this we can understand the object of law of limitation. You can also write down like this, the object of law of limitation is law of limitation is a statute. Law of limitation is a statute of repose, peace and justice. ये तीनों पॉइंट मेन इंपॉर्टेंट है. दिस आर द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव. इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे साथ किसी का डिस्प्यूट है और मैंने टाइम एक्सपायर करने का बाद आई एम फाइलिंग द मैटर अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिफेंडेंट. सपोज देयर वाज अ केस इन रिगार्ड टू सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी. कुछ पैसा को लेकर डिस्प्यूट है तो मुझे मामला करना पड़ेगा. I have to find the cause of action. So the cause of action is that लास्ट ड्यू डेट कवर हो गया, उसके बाद मुझे 3 साल टाइम लॉ दे रहा है केस फाइल करने के लिए, बट आई हैव नॉट
I have not filed the matter within 3 years from the last due date. From the last due date expired. तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब I am not aware of my remedy. I am just thinking that whenever I will go before the court, my case will be entertained by the court. Court will not entertain if there is expiration of the limitation period. Court will not entertain because that's an harassment for the court also and that's an harassment for the defendant also. तो सबको क्या चाहिए? सबको शांति से रहना चाहिए, पीस एंड जस्टिस. अचानक मान लो मेरे साथ आपका कुछ डिस्प्यूट हुआ है और उस डिस्प्यूट इज रिलेटेड टू सब्जेक्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. तो आज 2020 है और आपने मेरे अगेंस्ट में केस किया 2030 में. विल द कोर्ट एंटरटेन? यस, हो सकता है, क्योंकि सिविल केस में सूट रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी आपका लिमिटेशन पीरियड रहता है 12 इयर्स. इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपका रहता है 12 इयर्स, बट बाकी का केस जैसे रिकवरी ऑफ मनी वो 3 साल रहता है. तो आपको 3 साल का अंदर आना है. आप 3 साल के बाद आ रहे हो तो कोर्ट आपको पूछेगा व्हाई यू हैव डिलेड द मैटर. इट इज अ टाइम बर्ड सूट. इट्स अ टाइम बर्ड सूट. सो आप अचानक किसी के अगेंस्ट में 20 साल बाद केस लेके आ रहे हो एंड दैट विल बी अटर सरप्राइज. द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन. कोर्ट विल डिमांड द आंसर फ्रॉम यू where you were during this time, why you have not filed the matter within these 3 years. एक दिन के लिए जवाब हो सकता है. एक दिन के लिए कोर्ट आपको पूछताछ कर सकता है. why have you not filed the matter within this time bound period. that means you are violating the provisions of limitation act. कोई भी आदमी कभी भी आ सकता है कोर्ट में. लिमिटेशन कोई नहीं मानेगा तो इसमें क्या होगा? that will be causing defeat of justice. That is an harassment to the court also. So limitation act Limitation Act 1963 prescribes limitation period. During which an aggrieved may knock at the door of judiciary. तो लिमिटेशन पीरियड प्रेस्क्राइब होता है. अभी सर मैटर के ऊपर डिपेंड करता है. अभी आप सूट फाइल कर रहे हो इन द सेंस ऑफ रिकवरी ऑफ मनी, पेमेंट ऑफ मनी को लेकर कुछ झगड़ा है, आपको रिपेमेंट नहीं किया मिस्टर बी ने. सो इन दैट केस ड्यू डेट्स छोड़ के नेक्स्ट दिन से 3 साल तक आपको टाइम लॉ दे रहा है टू फाइल द मैटर. सो यू शुड हैव फाइल द केस विद इन दिस 3 years. जैसे एक एग्जाम्पल सोचो, आप किसी को थप्पड़ मारा, टेक एन एग्जाम्पल. वो आज ही रोएगा, वो 10 साल बाद में तो नहीं रोएगा. इफ यू स्लैप एनी पर्सन, दैट पर्सन विल क्राई टुडे ओनली. दैट पर्सन विल नॉट क्राई आफ्टर 10 years. सो व्हेन यू आर नॉट अवेयर ऑफ द टाइम, दैट मीन्स you are not aware of your remedy. The Limitation Act bars your remedy. The Limitation Act does not bar your right. It bars the remedy. आपको remedy नहीं लग पा. remedy पाने के लिए you should be aware of the law. और law कहता है आपको इस टाइम के अंदर आना है as per the prescribed limitation period given in the Limitation Act. So then only the aggrieved party can get justice. Right? तो एक नोट लिख लो. नोट लिख लो. Note is that law assists those persons. So law assists the vigilant. Vigilant का मतलब क्या है? इसका मतलब अवेयर. जो टाइम के ऊपर अवेयर है उसको प्रॉपर टाइम में रेमेडी मिल सकता है. जो टाइम के ऊपर अवेयर नहीं है, मान लो जो केस फाइल करना था 3 साल के अंदर 2021 और मैं फाइल कर रहा हूं 2024 में, द कोर्ट विल नॉट एंटरटेन बिकॉज देयर इज अ डिफीट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन. कब कॉज ऑफ एक्शन हुआ था? जैसे आपको मैं बताता हूं, आपने माचिस लगा के आग जला दिया तो आग तो आज ही जलेगा ना.
परसों तो नहीं चलेगा, वैसे ही बोल रहे यू शुड बी अवेयर ऑफ द टाइम. सो लॉ असिस्ट द विजिलेंट एंड नॉट द वन who sleeps over the who sleeps over his right. तो ये दोनों लीगल मैक्सिम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ही लॉ ऑफ लिमिटेशंस इज एक्चुअली स्टैंडिंग. ओके, नाउ आई विल नॉट डिस्कस फ्रॉम सेक्शन 1 सेक्शन 2. दिस इज एक्चुअली a study with a matching of provisions. Matching of provision मतलब मैं सेक्शन 27 से भी शुरू कर सकते हूँ, फिर 27 से 18 में जा सकते हूँ, बिकॉज the reading of limitation actually should be like that, where you can form a structure how the limitation period is actually governing the laws which you are studying. देखो, आप जितना 5 years का अंदर जितना लॉ पढ़ रहे हो, majority of the laws have to obey this limitation act. This limitation act is prevailing on various laws. आप क्रिमिनल केस में भी देखो, सिविल केस में भी देखो. आप सिविल केस में जो वैराइटीज आता है, पार्टनरशिप एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बैंकिंग रिलेटेड केसेस, लिमिटेशन पीरियड इज गवर्निंग देम. लिमिटेशन का मतलब क्या है? यू आर अवेयर ऑफ द टाइम एंड फॉर योर अवेयरनेस you are filing the matter before the court within the proper time. Then only the suit can be properly entertained by the court. You cannot claim at any point of time which is not within the limitation. So let's talk about section 27 first. Section 27 का जो मूल कारण है, it is saying that limitation period bars right to sue and not right to receive payment सर इसका मतलब क्या है? टेक एन एग्जांपल. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लोन दिया था, फिर वैसा ही केस, कितना सर? 1 लाख लोन दिया था. तो मिस्टर ए को 3 साल के अंदर मैटर को फाइल करना है, बट 3 साल के अंदर फाइल नहीं किया. मान लो 3 साल के बाद और 2 साल आ गया, मान लो 5वां साल में जाके केस फाइल करे मिस्टर बी के केस में. कैन यू डू दैट? यस, इफ मिस्टर ए हैज फाइल्ड द मैटर, but if it comes to the knowledge of the court that he is coming after a long period of time, and also that is after the expiration of the period, the court will reject that particular suit on the ground that the suit is barred by limitation. But इसका मतलब ये नहीं है it is barring the right to receive payment. So limitation period bars the right to sue, right to get the remedy, but it cannot bar the right to receive payment. मान लो जब मेरा केस कोर्ट ने अलाउ नहीं किया on the ground of time barred limitation, I can also take some other courts of enforcement. ठीक है, कोर्ट में